Hello students, welcome to the class today. How are you all doing? Hope you all are doing fine. Got it? So, yes, let's be back now. We are carrying on with this chapter 8. And what is this chapter talking about? This chapter is talking about the human environment in the tropical and the subtropical region. So, what we were talking about in this chapter, in the last video, we were talking about the topography. Now, what does this topography include? This topography is including various kind of landforms. Okay, pahad hain, rivers hain. I mean, the landforms that we find in the different parts of India, world, I would say. Topography doesn't include and doesn't talk about only India. It is talking about the world. So ये हमने किया. उसके बाद we were also talking about the Amazon basin. A lot of things we have discussed. I'm not repeating it. Then we were talking about Ganga Brahmaputra basin, right? In the last class, what we were talking about was the Ganga Brahmaputra basin. In this Ganga Brahmaputra basin, we have understood about the different kind of flora, fauna, animals, plants, all these that are existing in the Brahmaputra, in the Ganga Brahmaputra region. Here we have understood about the life of the people, how do they live, what are their living conditions, क्या खाते हैं, किस तरह के घरों में रहते हैं, and the delta region. There is a delta also here. So delta region में what happens, the area, I mean the forest that is there is called as the mangrove forest. हाँ, ये तो आप मेरे को बताओगे. You have already told me about it. So the different kind of animals that are found here, the different kind of plants that are found here, and we are also talking about the different kind of fish. In the last video that we have discussed, we were talking about the different variety of fish found here. क्या क्या था? Yes, rohu, katla, hilsa, all these are the variety of fish that is found in this area. Animals are also found. किस तरह के animals मिलते हैं यहाँ पे? We have seen elephant, tiger, deer, monkey, ये सारे animals हैं. The major, I had shown the picture also to you in the last video. The picture of the one-horned rhinoceros, right? So one-horned rhinoceros you all had seen, and you all I told you that it is something that is very rare, not found anywhere in the world, but it is found in India. So that makes us very proud of it. Now what we understand is कि the people who are living there, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है? How is their life like? Got it? So let us understand about the life of the people living in this area. Got it? I mean Delta region, इधर जो बंगाल में जो लोग रहते हैं उनके बारे में हम एक बात करेंगे. छोटी सी मतलब केस स्टडीज गिवन, केस स्टडी मतलब हम एक एग्जाम्पल लेके और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे. We will talk about some example and then we will try to understand the things in a large perspective. किस तरह से चीजें होती हैं इसको हम समझने की कोशिश करेंगे. Got it? So हम क्या पढ़ रहे हैं? The case study that is there कि we said now that water bodies, water is very important. चाहे रिवर में हो, चाहे वेल में हो, फ्रेश वाटर. सी वाटर तो इतना ज्यादा सी वाटर है. 90% ऑफ आवर, 90% तो नहीं बट 70% ऑफ द अर्थ कंटेन सी वाटर. And drinking water is so less fresh water. I'm talking about my dear students. Got it? So if there is a lake, जैसे ऑक्सबो लेक था. Now when this kind of lake is formed, so how does the lake water or the lake support the people living there? वहां पे जो लोग रहते हैं उनको ये लेक वाटर से क्या फायदा होता है? That is what we will be understanding. Lake क्या है? A source of livelihood. Got it?
लोगों की जिंदगी काटने के लिए ये लेक का क्या योगदान है? वॉट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेक in this source of livelihood? How do the people carry forward their activities? This is what we need to understand through this case study. इसमें क्या हुआ कि we are talking about a person, we are talking about a man called, his name was विनोद. ठीक है, बंगाल में रहते हैं और वो क्या काम करता है? Is a fisherman, मच्छी पकड़ने का काम करता है. Got it? Now what happens, ये कहाँ रहता है? He is living in Matwali Mound village of Bihar. ठीक है, and lives in Matwali Mound village in Bihar. अब आपको इसमें क्या याद रखना है? व्हाट डू यू नीड टू रिमेंबर चिल्ड्रन? यू हैव टू रिमेंबर द नेम एंड हिज ऑक्यूपेशन, मतलब क्या काम कर रहा था विनोद, व्हाट वर्क ही वाज डूइंग, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज वेयर ही इज स्टेइंग. सो ही इज स्टेइंग इन मतवाली माउंट विलेज. नाउ व्हाट हैपेंड, बिहार के एक विलेज में ये रहता है. ही इज अ वेरी हैप्पी मैन, हैप्पी गो लकी, बहुत बहुत आराम आराम से रहता है, बहुत खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Then what happened कि there are other fishermen, he has got his friends also ना. Fisherman है तो अकेले तो मछली पकड़ने नहीं जाता होगा ना. When he is going to catch fish, तो he has got his some more friends, and what is their name? Ravinder, Kishore, Rajiv. Okay. Other fishermen are there. Who are his friends? Named, क्या नाम है? Yes, please remember, because क्या होता है अक्सर क्वेश्चन इसी तरह के पूछ लिए जाते हैं. Named राजीव, रविंदर और राजीव, रविंदर, किशोर. Got it? तो ये इनके फ्रेंड्स हैं. इसने क्या किया ना, इन दिस विलेज माउंट, मतवाली विलेज माउंट जो था, मतवाली माउंट विलेज, वहां पे एक देयर वॉज वन ऑक्सबो लेक. ऑक्सबो लेक वॉज देयर बट इट वॉज वेरी डर्टी. उसमें बहुत ज्यादा, आई मीन लॉट ऑफ डेब्रिस वॉज देयर इन दैट लेक. इट कुड नॉट बी यूज्ड प्रॉपर्ली. उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था. So what did he do along with his friends? He cleaned this lake, this oxbow lake. Got it? He cleaned the lake in his village. उसके विलेज में जो लेक था ना, उसको इसने क्या किया, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके. अब आप सोचोगे कि मैम ये कैसे क्लीन कर दिया उन्होंने. Actually what happens that the people who are living in the villages and all ना, गाँव में जो लोग रहते हैं, they are very good at that. इनको पता रहता है what are the traditional methods, पानी को कैसे साफ करना है, मट्टी के बर्तन में पानी रख के पीते हैं तो उसका क्या फायदा होता है. lot of things they know on their own. Okay, and उसमें what did he do? The oxbow lake that was there, he cultivated different varieties of fish in that lake. थोड़ा थोड़ा fish कहीं कहीं से खरीद के लाके, and he set them in that lake. उनको छोड़ दिया उस लेक में. Got it? Now what happened when these fish was there, different varieties of fish which were there, the local weed which is called as Vallineria hydrilla. Vallineria hydrilla इन्होंने क्या किया, इसी लेक पे it was growing and it was the food of the fish. इस fish का this was the food. क्या, what was the name of the food? Vallineria hydrilla. Okay. He set some fish in the pond, oblique lake. He set some, variety of
डिफरेंट काइंड्स ना, जो अभी हमने पढ़ा था, हिल्सा, रोहू, कटला, हाँ, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिश दैट वाज देयर, उसकी कुछ कुछ फिश लाके ही सेट देम इन दिस लेक, इसी लेक में ले आके उसको उनको छोड़ दिया। एंड लेक के अंदर में एक प्लांट था, लोकल वीड, वन प्लांट वॉज देयर, पानी के अंदर जो द प्लांट्स, देयर इज डिफरेंट प्लांट किंगडम. So inside the water there was a different plant which was very good for the fish, and the fish grew in a very short time. Now what happened? The land around the lake was fertile, okay, and the fish got a weed. वीट मतलब एक जो फिश के खाने का जो सामान है, जो चारा कहते हैं, विच फिश रेलिशियस, जो फिश को खाने में बहुत अच्छा लगता है, दैट काइंड ऑफ मटेरियल, दैट काइंड ऑफ अ प्लांट वाज अवेलेबल इनसाइड. फिश गॉट द वीड, लोकल वीड, वैलिनेरिया हाइड्रिला. वैलिनेरिया हाइड्रिला inside the lake. Got it? कितना अच्छा काम किया इन्होंने. That fish is always in demand all over. सारी जगह पे तो लोग फिश खाते हैं. The people who are eating, not those who are non-vegetarians, they eat fish frequently. काफी सारा फिश ये खाते हैं. तो what did he do कि ये अपने घर के आसपास में he has got the, because of the lake, पानी है तो पानी में से जो मिट्टी आके वहां पे द सॉइल, ऑक्सबो लेक के साथ, लेक तो मतलब मियांडर था, मियांडर कट के द लेक हैज बीन फॉर्म्ड. नाउ द सॉइल नियर द लेक वाज वेरी फर्टाइल बिकॉज इट वाज ब्रॉट बाय द रिवर. तो यहां पे इसने क्या किया, ही स्टार्टेड ग्रोइंग डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स. क्या क्या था, मेज, पल्स, पैडी, all kind of crops he started growing. And kaise, how did he use this, how did he plow, how did he use this land? So he used his animals to plow the field. इस फील्ड पे इन्होंने हल चलाने के लिए अपने बफेलो का इस्तेमाल किया. एंड लॉट ऑफ फिश ही यूज्ड टू कैच फ्रॉम द रिवर. एनफ फिश टू ईट, खाने के लिए खूब सारे फिश है, and enough fish also to sell in the market. Got it? So he is sowing crops near lake. क्या क्या क्रॉप्स है, लाइक पल्स, दाल, पल्स, मेज, paddy, all these plants is, all these crops he is growing. अब आप सोच लो कि आराम से the land is being plowed, he is using this material for his own self, he is looking after the family. And now what happened in the lake, बहुत कम टाइम में he has set some fish, कुछ 100 करीब फिश उसने उसमें डाले थे. 100 क्या मतलब 10-12 फिश डाले थे. एंड नाउ द फिश हैज ग्रोन टू अ वेरी हाई लेवल. एंड यू नो व्हाट हैपेंस इज दैट द फ्रेश वाटर फिश, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो आल्सो, दैट द फिश विच इज अवेलेबल इन द फ्रेश वाटर, ये जो लेक की जो फिश होती है ना, इसका टेस्ट अलग होता है एंड इट इज इन डिमांड इन द मार्केट. जो मच्छी का जो बाजार होता है ना, पीपल लुक फॉर दिस काइंड ऑफ फिश. गॉट इट? तो now what happened, it was very beneficial for him. Oxbow lake को clean करके, now they have enough fish to eat and enough fish to sell in the market. विनोद का, ठीक है. now आप सोचो थोड़ा सा, क्या होता है ना बेटे, that we don't think of the opportunity that is near us. हमारे आसपास जो नहीं होता है ना, जो चीज नहीं होती हम उसी के बारे में सोचते हो ये होता वो होता. अरे जो चीज आपके पास है पहले उसका तो इस्तेमाल करो. He saw that the lake is there, fresh water में fish can be left and fish will grow. So lot of fish to eat and lot of fish to sell. Okay. So now what happened? He had
enough fish to consume मतलब खाने के लिए भी बहुत फिश था, and to sell also in nearby market. पास में मच्छी बाजार, Bengal and Bihar, everywhere you will find, because fish market is separate, it smells, stinks a lot. तो एवरीवेयर आप कहीं भी फिश को लेके नहीं बैठ सकते, जहां पे थोड़ा ओपन है सराउंडिंग्स या जहां पे थोड़ी सी एयर इज देयर. I mean, otherwise the people who don't eat fish, who are coming to purchase vegetables, उनको फिश वाली स्मेल से फिर प्रॉब्लम होने लगती है. Okay. Now what happened? Now the community is living in very harmoniously. Pond है, pond में इतनी fish है, so much of fish to eat and so much of fish to sell. And what happens then when the fish is there in the pond, the fresh water lake में, so it is good for the environment also. Environment में there is balance, lot of economic benefit is there. So you can understand कितने अच्छे से and कितने planned way में they have done everything. सारी चीजें कितने अच्छे से carry forward किया इन्होंने. Got it? This is what I wanted to tell you. And the pollutants nearby towns, they do not find their way. Lake water में जो है आसपास के लोग उसको pollute नहीं कर दें, or they should not leave the waste material in the lake. So the fish cultivation will not face any threat. The fish is there as long as the water is fresh. और जैसे ही वाटर को क्या मेनी पीपल ना देखा उसमें फूल डाल देते हैं और पता नहीं क्या क्या व्हाट ऑल थिंग्स दे पुट इन द वाटर. ठीक है, तो दिस इज नॉट गुड फॉर द वाटर. वाटर बिकम्स कंटामिनेटेड, वो द वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड. तो इससे हमको बचाना है, एंड वी हैव टू सी दैट हिज लाइफ वुड बी गुड as long as the pollution, the lake is pollution free. ओके, और डेब्रिस फ्री और वेस्ट मटेरियल फ्री. वेस्ट मटेरियल इस तरह के वाटर बॉडीज में नहीं डालना चाहिए, ये बताने की कोशिश की जा रही है. सो दिस वाज वन केस स्टडी वेयर वी अंडरस्टूड कि विनोद ही इज अ फिशरमैन. कितना पढ़ा लिखा होगा ये भी सोचिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मच एजुकेटेड ही माइट बी और व्हाट माइट बी हिज एजुकेशन लेवल. Leaving all that aside, he is a fisherman living in the Matwali Mound village in Bihar, and enough. Now he has cleaned up the Oxbow Lake and set some fish in that. Now you can see how nicely he's carrying on his livelihood. Livelihood means source of livelihood. Fish say he is earning. कितना? How much he has to invest? He has to invest very little. बहुत कम पैसा इनको इन्वेस्ट करना पड़ा, but look at the outcome. कितना अच्छा इसका नतीजा निकला, right? So this is what we understood by this case study, that small things are there, small areas are there which can give us employment and which can give us a good type of a life. The people who are living in the villages, the people who are living in the suburban areas, उनके बारे में. Now we are talking about the Ganga Brahmaputra basin, as you know it very well. A lot of discussions we had about the Ganga Brahmaputra basin. Now what we are understanding, इसमें अभी next जो समझने वाली बात है वो आप ये समझो कि because Ganga Brahmaputra basin is there, rivers are running, river is continuously flowing, there is no dearth of water, fresh water की कमी नहीं है. So what happens, several big towns and cities have developed near these rivers. Okay, here what we need to understand is that several towns and cities have developed near this area. This area means, please understand, the Ganga Brahmaputra region. मैंने एरिया लिख दिया है, ठीक है? गंगा ब्रह्मपुत्र basin. Lot of big towns and cities. कौन से हैं? Allahabad, big towns. You are living in a big town, my dear children. Yes. Allahabad, Kanpur, Varanasi, Lucknow, Patna, Kolkata. All these big cities
are situated on the bank of these big rivers. Okay, and all these are cosmopolitan cities, big cities where the population is more than 10 lakh are located near the river Ganga. 10 lakh people living at one place, one city. 1 lakh 2 lakh समझ में आता है, but the population is above 10 lakh. This shows that how developed the city is, how developed the area is. सब लोग कहाँ पे रहना चाहते हैं? पानी की अवेलेबिलिटी हो, लाइट हमेशा आ रही हो, and you have all kind of facilities that you need is available in the big cities. गाँव के लोग भी क्या करते हैं? What do they do? The village people, they leave the village and they come and settle in the cities. Isn't it? It happens. You all might be also having your ancestors' place in the villages, but just see how well you all are settled in Varanasi, in the city. Got it? So, population in big cities is above 10 lakh. I just told you na कि more and more people come and settle and want to settle in these cities. A problem. हम तो we are talking about the human environment. Now what is the problem? 10 lakh people came and living in the city area. What will happen to all the waste water from these cities? इस सिटी में जितने लोग रह रहे हैं उनके घरों का वेस्ट वाटर प्लस industries that have got the wastewater, what do? They are discharging all these wastewater into the river. Yes, dear children, that is the reality, that the rivers are facing this big crisis. Okay, so all the wastewater of these cities and industries क्या हो रहा है? These cities and industries are polluting the river. Pollution अब आप समझो. Now you can understand. Okay, are polluting river. Got it? So you can understand ki how much harmful it is. So now you can see that the pollution in river is increasing. This is what we need to avoid. नदियां हैं, फ्रेश वाटर है, इस वाटर को हमको अच्छे से यूज करना है. We need to use this water for something good, something creative, something that can give occupation to the people, but we are just not using it properly. In fact, pollute भी कर रहे हैं. Such a wrong thing. गलत है, नहीं होना चाहिए. But it is happening. Got it? So this is there, and all the 4 ways of transportation is well developed. All transportation is well developed in this area. All the transportation वही है, I mean railways, roadways, waterways, airways. Major 4 modes of communication that is there. And plain areas में क्या होता है? Roadways and railways, the people are taking people from one place to the other place. Major mode of communication, major mode of transportation, major mode of transportation is क्या है? Is railways and roadways, right? Yes, railways and roadways. So many people are using.
आपने अपने घरों में भी देखा होगा, आसपास के भी कहीं जगह में जाना है ना, अरे टिकट बुक करा दो, ठीक है. पीपल आर यूजिंग रेलवेज, पीपल आर यूजिंग रोडवेज ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. इलाहाबाद तक जाना है, टिकट बुक कराने की जरूरत नहीं. बसेस आर रनिंग द होल डे. आफ्टर एवरी हाफ एन आवर यू विल फाइंड अ बस फॉर द इलाहाबाद, लखनऊ. गॉट इट. इट इज ऑल्सो शेड्यूल. अभी तो क्या है, रेड बस एंड ऑल ऑनलाइन यू कैन बुक द टिकट्स फॉर द बसेस ऑल्सो. ओके. So Kolkata is one of the very important ports on river Hooghly. River is there, Hooghly. उसमें सबसे important सी पोर्ट that is there, जहां से कि inland waterways से सामान आता है. Means from Ganga, from Son and Teesta, जितने भी all these rivers that are there, from those rivers the material is reaching to the Hooghly river. River Hooghly, and plain area has also got large number of airports. So please remember that. क्या हमको बताना है इसमें? अगर if I ask you mention a major airport, major airport नहीं, major port in कोलकाता क्या है? हुगली. Seaport. Okay. प्लेन एरिया में देर इज ऑल्सो लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स. प्लेन में है ना, नहीं तो वो कैसे रनवे पे, हाउ विल द प्लेन रन एंड देन टेक ऑफ. पहाड़ों पे तो हाउ विल इट रन, इट कांट टेक ऑफ, उल्टा पलट जाएगा. इट इज सो डेंजरस. गॉट इट. सो द रेलवेज, द रोडवेज, ऑल दीज आर वर्किंग प्रॉपरली and it is giving us proper communication. This is what we have done today. I would just show you some parts that is there. Another major activity that is happening here is tourism. Tourism is another major activity of this area. Got it? Please remember that tourism is another major activity. बहुत सारे लोग, so many people are coming to these big cities. Very prominent. हाँ, major port area, airport and roadways, and it is all connected. Taj Mahal is there on the bank of river Yamuna. Allahabad is there on the जहाँ पे Triveni it is called. अभी तो there is no Allahabad. ये पुरानी book है ना, that's why Allahabad is mentioned. There is no city called Allahabad. So what is the name of the city? Oh yes, we need to discuss it in the online session. So we will be discussing it कि अभी इलाहाबाद नाम का तो कोई city नहीं है. So which city are we talking about? Got it? So this is what we have done today. And I think we have completed the chapter. Next class में we will be discussing the question and answers. Okay, children? So students, we talked about the story of Binod today. Just wanted to show you this. Another important बहुत nice information is here. In the fresh waters of river Ganga and river Brahmaputra, lot of dolphins are found. ठीक है, beautiful fish that is there, the beautiful big fish that is there is dolphin. It is locally called susu. Yes, but that is how it is called. क्यों है? Because it is called as blind dolphin. देख नहीं सकते. तो क्या है, सुसु इज एन इंडिकेशन ऑफ, मतलब रिवर वाटर इज गुड, रिवर वाटर इज़ वेरी नाइस. ये तब पता चलता है अगर हमको उसमें सुसु नज़र आता है. सुसु डॉल्फिन, कम ऑन. सो अगर बहुत सारे वाटर में इफ़ देयर इज़ लॉट ऑफ केमिकल इन्वॉल्व, अगर बहुत सारा केमिकल वाटर में डाल दिया गया है तो हमको ये डॉल्फिन जो है, दीज डॉल्फिन्स आर गेटिंग किल्ड. एंड ब्लाइंड डॉल्फिन्स इनको कहते हैं. जस्ट एट देयर पिक्चर, लुक एट द पिक्चर दैट इज़ गिवन हियर. हाई अमाउंट ऑफ केमिकल्स. क्या होता है कि वी हैव टॉक्ड अबाउट द इंडस्ट्रियल वेस्ट that is going in the
इन द रिवर्स, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इसको हमको रोकना है। We need to stop the wastewater flowage in these rivers. We have to see that wastewater is not flowing here. ये देख लो आप, एक polluted lake देखो कैसा है, गंदा है। इसको अगर साफ कर दिया जाए, it could be so good. And yes, my dear children, NCERT book है, but very important, हमारी बनारस, our Varanasi, the beautiful, तीनों लोकों से न्यारी हमारी काशी, right? So with this, I'm finishing today's class, my dear children. एक रिवर गंगा को क्लीन करने के लिए नमामि गंगा प्रोजेक्ट चल रहा है. लेट अस होप एंड विश एंड प्रे दैट इट वर्क्स प्रॉपरली एंड द गंगा बिकम्स क्लीन. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू.